Good morning, student. In the previous video, we take section formula and midpoint formula. So in midpoint formula, midpoint can be find out, midpoint formula can be find out by using the section formula. सेक्शन फॉर्मूले का ही यूज करके हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला फाइंड आउट किया है. वन मोर फॉर्मूला इज देयर, दैट इज सेंट्रॉइड फॉर्मूला. अब ये आपके सिलेबस में स्पेशली नहीं दिया है, बट इट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द सेक्शन फॉर्मूला. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला. तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय द सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड का मतलब हो गया a point of intersection of all the three medium. Means the point where all the three medians intersect each other, that point is called as a centroid. So this is of your centroid and it is represented by G. Okay, if I consider this is triangle ABC, okay, and D is the midpoint of BC, therefore AD is the median. Got it? It is the line segment joining the vertex and the midpoint of the opposite side. So this D is become the midpoint of BC. E is the midpoint of AC and F is the midpoint of EB. So if all the three medians are intersect in this point and this point is considered as a centroid. ये point को क्या कहेंगे? Centroid. And how can we find the coordinate of this centroid? That can be find out by using this formula, that is centroid formula. Here the coordinate of triangles are x1 y1, x2 y2 and x3 y3. Okay, these are the coordinate x1 y1, x2 y2 and x3 y3. Okay, now here as we want to find the centroid, first of all we consider the coordinate of D. Now here BC is the segment, ये B है आपका और ये C है, and D is the midpoint of BC. This is of your x2 y2 and this is x3 y3. So can we say that D is the midpoint of BC? So here D is the midpoint of BC. So by using midpoint we can find the coordinate of D. So by midpoint formula, we can find the coordinate of D. So the coordinate of D, the formula is x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. This is of your formula. So instead of this x1, here what we consider x2 and x2 की जगह क्या consider करेंगे x3, क्योंकि ये दो पॉइंट हमको लेना है. So the coordinate of D is x2 plus x3 upon 2 and y2 plus y3 upon 2. So these are the coordinate. This is the coordinate of D. तो D का coordinate हो गया x2 plus x3 upon 2 and y2 plus y3 upon 2. Understood? Now here we got the coordinate of D. Now here we consider AD is the segment. अब मैं कंसीडर कर रहा हूं AD को क्या है, ये segment है and G is the point here. Okay, you know that centroid divide the median in ratio 2:1. Centroid ये median को कौन से पार्ट में डिवाइड करता है? 2:1. So this part is nothing but 2 and this part is considered as a 1. What is the coordinate of A? That is x1, y1. What is the coordinate of D? x2 plus x3 upon 2 and y2 plus y3 upon 2. Okay, these are the coordinate of A and D. Can we say that G xy, क्योंकि डिवीजन करना कौन है? कौन कर रहा है डिवीजन? G and xy be divide AD in ratio 2:1. So can we apply here the section formula, that is G xy divide AB in the ratio, कौन सा रेशियो में? 2:1.
1 में करेगा डिवाइड, इट मींस दैट बाइसेक्शन फॉर्मूला, बाइसेक्शन फॉर्मूला, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ जी, जी के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है जी के कोऑर्डिनेट का, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 plus m2. So by using this formula we can find the coordinate of G. Okay, now here AB को डिवाइड, सॉरी AB को नहीं, किसको डिवाइड कर रहा है ये, AD को डिवाइड कर रहा है, तो हम A के कोऑर्डिनेट को बोलेंगे x1 y1 और D के कोऑर्डिनेट को बोलेंगे x2 y2. समझ में आ गया? A के कोऑर्डिनेट को क्या बोला मैंने, x1 y1 और D के कोऑर्डिनेट को बोला मैंने x2 y2. Therefore the coordinate of G is given by, the coordinate of G is given by m1, m1 means what, 2 into x2, x2 means this coordinate, D का क्या है कोऑर्डिनेट, x2 plus x3 upon 2 plus of m2 x1, m2 means 1 into x1 means x1, okay, upon m plus n, m1 plus m2 that is 2 plus 1, comma y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2, m1 है आपका 2 into y2 means what, y2 plus y3 upon 2, okay, plus of m2 into y1, got it, m2 y1 upon 2 plus 1. So by calculation what we will get, this 2 and 2 get cancelled, what is remaining, x2 plus x3 plus x1, so this can be written as x1 plus x2 plus x3 upon 3, 2 plus 1 3, and y1 ये भी cancel हो गया 2 2, तो क्या बचा, y1 plus y2 plus y3, y1 plus y2 plus y3 upon 3, okay. So this is called as a centroid formula. G is the centroid of triangle ABC whose vertices are x1 y1, x2 y2 and x3 y3. Then the coordinate of G is given by x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y1 plus y2 plus y3 upon 3. Now one question, find the ratio in which the line segment joining A and B. Now this is of your AB, A और ये B है, okay. इसके कोऑर्डिनेट दिया है 1, -5 and its coordinate is -4, 5. Find the ratio which divide the segment joining these 2 points is divided by x axis. किसने डिवाइड किया है, x axis ने डिवाइड किया है, तो ये जो कोऑर्डिनेट रहेंगे, ये कोऑर्डिनेट रहेंगे, एक रहेगा इन विच क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट, और एक रहेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट. कहां पे रहेगा, 4th और 2nd, वो डायग्राम निकाल के देता हूं, ओके. दिस इज ऑफ योर y एक्सिस एंड दिस इज ऑफ योर x एक्सिस, ये x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. A 1, -5 यहां पे रहेगा कहीं तो भी, A 1, -5 and B is the point where the point B -4, 5, तो B रहेगा यहां पे कहीं तो भी -4, 5. Got it? किसने डिवाइड किया है, x एक्सिस ने, तो दिस इज ऑफ योर लाइन. So this is the point A, this is the point B and divided by x axis, ये है point P. अब ये जो point P है, ये पॉइंट कहां पे है, x एक्सिस पे है, तो नेचुरली इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे है तो x, 0 बिकॉज इट्स y कोऑर्डिनेट इज 0. ओके, अंडरस्टूड हो गया. यही पॉइंट यदि y एक्सिस पे होता तो 0, y. ये पॉइंट यदि y एक्सिस पे होता तो क्या आता, 0, y. सो हियर वी राइट p x, 0 divide AB in the ratio
इन विच रेशियो m1:m2। तो ये हो गया आपका m1 का पार्ट और ये हो गया आपका m2 का पार्ट। गॉट इट। अब हमारे पास में सेक्शन फॉर्मूला है, सो बाय सेक्शन फॉर्मूला, सो विच फॉर्मूला वी कैन अप्लाई, आइदर x और y। तो जिसका वैल्यू दिया है उसी का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि मैं x का फॉर्मूला यूज करूंगा तो मुझे m1:m2 मिलेगा नहीं जल्दी, क्योंकि x का भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। इसके पहले के वीडियो में हमने रेशियो फाइंड आउट करना सीखा है। ओके, सो हियर वी अप्लाई द फॉर्मूला फॉर y। सो y इज इक्वल्स टू, व्हाट इज दैट फॉर्मूला, m1y2, ओके, प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। y का वैल्यू कितना है, 0, जो डिवाइड कर रहा है उसको xy, जिसको डिवाइड कर रहा है उसमें पहला पॉइंट रहेगा x1 y1 और दूसरा पॉइंट रहेगा x2 y2। पुट अप करेंगे वैल्यू, m1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1, नॉट गिवन, m1, y2 मींस क्या, 5 प्लस m2, द वैल्यू इज नॉट गिवन, y1 -5 upon m1 plus m2 as it is m1 plus m2. Now we will transfer this m1 plus m2 left hand side. So 0 into m1 plus m2 is equals to here 5m1 minus 5m2. Got it? Now 0 into something is always equals to 0. So we get here 0. Now 5m1 minus 5m2. m2 को ट्रांसफर करेंगे, प्लस आ जाएगा इधर, सो 5m2 इज इक्वल्स टू 5m1। ट्रांसफर करेंगे m2 को, सो व्हाट वी विल गेट, 5 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू m1 अपॉन m2। 5 will be get cancel, what we will get here, m1 upon m2 is equals to 1 upon 1. So this become the ratio. Okay, means क्या मिला आपको, रेशियो कौन सा मिला, मीन इन विच रेशियो, मींस m1 upon m2 is equals to 1 upon 1। इतना समझ गए। अब हमको चाहिए फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन मींस किसका, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमको, बिकॉज p डिवाइड द सेगमेंट AB है। सो हियर वी अप्लाई द फॉर्मूला फॉर x। सो x is equals to m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2, m1 plus m2. Therefore x is equals to m1, that is 1, into x2 means कितना, -4, plus m2 means 1, x1 means what, 1, divided by 1 plus 1. So x is equals to here -4 plus 1 upon 2. So x is equals to -3 upon 2. So the point of division is P and the coordinates are -3 upon 2, 0. So this is the point which is on x-axis and divide AB in ratio 1:1. Now next question, if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of the parallelogram. It means we want here parallelogram. So here this is of your parallelogram. Got it? Here we consider A, B, C and D. The coordinates of A are 1, 2, B 4, y, C x, 6 and D 3, 5. Got it? Are the vertices of a parallelogram taken in order? Order means A, B, C, D like this. Find x and y. Here we draw the diagonals. You know that diagonals bisect each other. Means यहाँ पे एक sentence लिखेंगे, diagonals of parallelogram bisect each other. अब डायगोनल से भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि if I consider this is the point M, so AM is equals to MC
एंड dm इज इक्वल्स टू mb ले सकते हैं हम लोग। अब यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम AC को कंसीडर करेंगे। सो कैन वी से दैट mxy be the midpoint of AC, ले सकता हूं मैं, because m is the midpoint of AC as well as m is the midpoint of DP also, because diagonal bisect each other. So m is the midpoint of AC, तो midpoint formula यूज करेंगे हम लोग by midpoint formula. What we write here, for AC we will consider this is x1 y1 and this is x2 y2. So the formula is m, what is the coordinate of x? Formula is x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. So this is the formula to find the midpoint m के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। मगर हमने क्या कंसीडर किया, AC का मिडपॉइंट कंसीडर किया, तो इसको बोलेंगे x1 y1 और इसको बोलेंगे x2 y2। सो पुट द वैल्यू m क्या है, फॉर्मूला में वैल्यू 1 plus x upon 2 and y1 plus y2 means 2 plus 6 upon कितना 2. So therefore m, what we will get, 1 plus x upon 2 and here 2 plus 6, 8, 6 plus 2 8, 8 upon 2 means कितना 4. So this is the coordinate of m. Now we can consider here again, can we say that m xy be the midpoint of किसका मिडपॉइंट लेंगे, BD का। अब पहले हमने किसका कंसीडर किया, AC का, हम अब किसका कंसीडर कर रहे हैं, BD का कंसीडर कर रहे हैं। सो बाय midpoint formula what we write here, the coordinate of m is given by x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2। तो यहां पे किसका मिडपॉइंट है, BD का मिडपॉइंट है। BD का मिडपॉइंट है तो इसको बोलेंगे x1 y1 और इसको बोलेंगे x2 y2। सो बाय यूजिंग दैट पॉइंट वी कैन कंसीडर x1 plus x2 upon 2, so x1 y1 x2 y2, so 4 plus 3 upon 2, got it, 4 plus 3 upon 2, and second y plus 5 upon 2, 4 plus 3 means 7, that is 7 upon 2, and this is y plus 5 upon 2. Now this is the coordinate of m, this is also the coordinate of m, means दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट किसके हैं, m के हैं, means these two coordinates are same. So therefore we equalize the coordinate, m के coordinate, ये भी पॉइंट m का है और ये भी पॉइंट है m का, therefore we can write as a 1 plus x upon 2 is equals to, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 7 upon 2, ये ले सकते हैं, मींस इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट दोनों सेम रहेगा, and we can write as a y coordinate also, 4 is equals to y plus 5 upon 2. Got it? Now we solve this, 2 get cancelled, 1 plus x is equals to 7, so x is equals to 7 minus 1, that is 6, ये आएगा, 7 minus 6 means 6, 7 minus 1 means 6, and y is equals to, means what we will get here, 2 को शिफ्ट करेंगे तो 4 2 8 हो गया, और ये 5 को ट्रांसफर किया तो -5 is equals to y, so y is equals to what we will get, 3. The value of x is equals to 6 and y is equals to 3.